our CS. Here we have this installation. So this node we will be covering today. So we have done functional location, equipment, and today we will cover this installation. So this is also a kind of technical object like functional location, equipment. So this is another option given by SAP, and this is called installation. So this we will see in detail what is this installation concept. Then later on we have also seen serial number. BOM we have to cover. So BOM I will take in next class. So let's see this installation part. So in CS, you will usually hear this term installed base. So installed base is when we have installed or we have supplied any such product which has multiple levels of equipment, multiple. It has a multi-level structure of components. So basically, it has different equipments or might be different functional locations also. And so let's say you have installed some diesel generator or some lift in the customer premises. So that lift will consist of multiple equipments. It will have multiple parts inside it. So there will be a higher level structure, one equipment, then another different parts will be inside that. And sometimes in one premises, let's say if we have done multiple installations, multiple lifts we have installed, so that also we can map in installed base. Okay, so multi-level structure of components for products at the customer side. And when it is internally, that is in the PM, but we are concerned about the customer side. So, so in installed base, you can see the detailed structure of what all products you have installed at the customer location. So main product, I mean the different structure you can see what is the higher level item, then what are the sub components. So that we will see in the coming slide. Now, its structure, so installed base, basically it will have header data and components. So header data, it is a kind of generic data like name, description, then who has created it. And in the component level, you will have the details of equipments that are installed, or if there are multiple functional locations. So that data you will see there. So components can have material, equipment, must or your functional location. Multiple components can be there in one installation. Then component consists of reference to master record. Describe the master respective additional data that describe. Okay, there is some additional data also that will be there in the master record, like the quantity, how much quantity of one any material you have used or which specific batch is used, so that details will also be there. The following master record should be part of component. So this all of this or few of this, so any combination. Serial number, that is yeah, maybe it is missed here, but it is linked to equipment, so equipment or material. So serial number is just what you say, extension to this material and equipment. So yeah, that is there. So any set of this components can be there in the installed base. Now how to create an installed base? So that we will see the transaction. IB51 is the transaction, so that we will see in the coming slide. So installed base will consist of your header data and the components like we have seen in previous slide. And there can be multiple components to each installed base or each installation, and there can be multiple subcomponents. It will be a hierarchical thing. There can be multiple components, subcomponents inside the installed base. Okay, now process flow. So you create an installed base of certain category. So this we will see when we are going in transaction.
So we have to enter the category, then system will create a number. Then we have to enter the header data, which is applicable to the entire all the components. Then we will enter the components, what all components, equipment or functional locations are there. That details we will enter. And so this will create a installation structure. Then we can see the structure indirectly in a system. Okay. So yeah, let me show you the also in system parallelly. So go to this customer site, this technical object installation, create installed base. This is the place. Click here, and now it will the transaction is IB51. So IB51 to create, then two to display, two to change, and three for display. So IB51 transaction you can note down. Then IBase category we have to basically enter what type of installation we are creating. Okay. Okay. So let's say if it is 01, we are to creating an installation, normal installation. Then 01, and just press enter. And then we can, so this number is generated by the system. Then we can give the details here, description here, and then here in bottom we have to assign the material, equipment, functional location, whichever we want to, which is we have installed in that location, whichever we want to track from the service perspective. Now let me open a existing one, because this creation will be a complex one. Many things we have to assign. Let's open an existing one which is already there in the system. So you can go here and just search for the existing ones. Let's say if I open anyone, I can see this is 7034. Okay, okay guys, let's see this one. Okay, so this kind of screen will come up. Here you can see this is the uh, top level, and then you have this precision pump, and there's some documentation for this pump inside this installation. So this is the number, installation number, then description, any related description will be there, and then status, then who has created this, then this creation details, created date, time. So then here in material, if any material is used, so that you can record here. If serial number was used, then serial number will be given here. Then in document, any related documents that will be given here. Okay. Yeah. Then here only if some functional location is linked, so that functional location will come up. So currently, I think in this example, it's not there, but bomb is used. So multiple things can be entered in one single place. And let's say you have installed in multiple locations. So multiple functional locations you can assign in the same installation. So from here you can track the different functional locations, different equipments, and different parts that are used. Now, if I go to presentation again. Okay, so how to create an installed base? So IB51. So this is the path like we have seen, installation, create IBase. In the CS module, we have to go, and we can also create from PM module. Okay, so create IBase. This is from the customer service module. So all comes under logistic customer service SAP ये करने के select करना हाँ, लॉजिस्टिक्स के अंदर में कस्टमर सर्विस, एंड देन मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपका it is all it is standard for all मतलब इसके लिए है ना, मतलब मैं अगर हाना में भी या हाना में भी सेम है। देखो आप, मैंने हाना भी ओपन कर रखा है, बस उसमें डेटा नहीं था, दैट इज द इशू। सो हाना सिस्टम, इफ यू गो,
here this is your HANA system, okay, S4 HANA Okay. system. So here also the path is same. Go to logistics, customer Okay. service, and then installation IB51. Okay. बट हाँ हियर यहाँ पे मैंने इसमें चेक किया था, इसमें कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पे पूरा ब्लैंक सिस्टम है. सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट शोन हियर, बट स्क्रीन वाइज एवरीथिंग इज सेम. इसमें सीएस में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है. नाउ ओके. So that is you can create an installation base with reference. जैसे आप existing कोई installation है उसको ही हमें कॉपी करके बनाना है नया. सो जैसे हम नॉर्मल कस्टमर कॉपी करके बना सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी रेफरेंस, जैसे आपके पास कोई रेफरेंस है 7034, तो यहाँ पे मैं उसको कॉपी करके ऐसे बना सकता हूँ. तो कॉपी करके वो डेटा जैसे आ गया यहाँ पे, देन आई कैन रीनेम इट और चेंज इट, जो भी इसमें changes I want to do. So that is the reference option. Now, okay. Now next is installation base can also be created from sales order. तो सेल्स ऑर्डर से भी क्रिएट हो जाता है और प्रोडक्शन ऑर्डर से क्रिएट हो जाता है, दोनों से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है. सो हाउ टू डू दैट, हियर इन द सेम स्क्रीन वी विल गो. यहाँ पे ये क्रिएट आईबीएस स्पेशल का एक ऑप्शन है नॉर्मल वाले से नीचे. So here you will see create a sales order reference. With which sales order reference you have to create, or with production data. So if with reference to sales order we are creating, let's say we got the sales order, and then from that sales order reference we want to create some installation. So हम sales order के reference पे बना सकते हैं, और ये प्रोडक्शन डेटा के बेस पे भी, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर से लिंक करके भी हम इसको बना सकते हैं. तो दोनों ऑप्शन इसमें दे रखा है. देन क्रिएशन, जैसे स्क्रीन पे जाऊंगा तो इट विल आस्क फॉर सेल्स ऑर्डर एंड देन आइटम डिटेल्स, वो एंटर करना पड़ेगा, एंड देन दैट स्क्रीन विल कम अप जो हमने पहले देखी थी. देन हियर रेफरेंस टू प्रोडक्शन में आपका प्रोडक्शन डेटा वगैरह एंटर करना पड़ेगा. सो देन दिस वे ऑल्सो इट कैन बी क्रिएटेड. नाउ दैट इज वन थिंग. वही इसमें एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्शन से कैसे होगा, सेल्स से कैसे होगा, स्टेप्स आर गिवन. Then after this, displaying के लिए we can go to IB53, और IB53 में जाके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और इफ़ यू नो द नंबर, डायरेक्टली नंबर यहाँ पे डाल के देख सकते हैं. एंड हियर वी कैन सी द दिस इज द स्ट्रक्चर, हियर इट इज शोइंग. जैसे इसमें जितने भी इसमें सब कंपोनेंट्स रहेंगे, ऑल विल बी शोइंग हियर. दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल शो द इसमें हायरार्की. ऑर्डर नंबर भी आता है ऑर्डर इसमें? नंबर वो सेल्स वाला जब क्रिएट करेंगे ना, व्हेन वी आर क्रिएटिंग विद रेफरेंस टू सेल्स, तो हाँ, आपको क्योंकि उसमें. मुझे क्या लगता है कि एक हम जैसे ऑर्डर बनाते हैं, एक हम्म. मटेरियल, पहले हम तो एक मटेरियल बनाएंगे, फिर उसको ऑर्डर बनाएंगे और हम्म. उसके अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर, इंस्टॉल बेस, इक्विपमेंट, ये सब बनाते जाएंगे ना, मतलब फंक्शन हम्म. वहाँ पे। जैसे सेल्स ऑर्डर से अगर लिंक करना है, तो सेल्स ऑर्डर जो सेल्स, दिस ऑप्शन वी हैव टू यूज. सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर और आइटम उसमें डालना पड़ेगा, एंड देन इट विल. एक चीज़ ये हम हाँ, जस्ट अभी अ मिनट. हाँ, समवन हैज कम टू माय गेट. एक 2 मिनट देना आप मुझे. हाँ, ओके. हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? ये अपन कहाँ से, IB51 से ही किया है? ये IB51 में ही नीचे, इफ यू गो हियर, तो एक तो ये नॉर्मल है कि डायरेक्टली हम इंस्टॉल्ड बेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड दूसरा है विद रेफरेंस टू सेल्स ऑर्डर. ओके ओके, जैसे हम आरे ऑर्डर वगैरह बनाते हैं हाँ, विद रेफरेंस, ओके ओके। तो जैसे सेल्स ऑर्डर से लिंक करके अगर बनाना है, तो सेल्स ऑर्डर और आइटम नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे, देन दैट स्क्रीन विल ओपन अप, जो आपका
IB51 में हमें दिख रहा था स्क्रीन, दैट स्क्रीन विल कम आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। तो ये लिंक्ड रहेगा आपका सेल्स ऑर्डर से। और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर से भी ये एक ऑप्शन दे रखा है, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर के रेफरेंस में बनाना है देन वी विल यूज दिस ऑप्शन। ओके। हाँ, तो बोथ ऑप्शंस आर देयर। फिर डिस्प्ले का तो वी कैन सी थ्रू IB51 दैट इज देयर। ओके। सो इसमें इंस्टॉल्ड बेस वो एक्सप्लेन किया है कि दिस इज व्हाट वी आर मैनेजिंग एट द कस्टमर साइड, दैट प्रोडक्ट्स और इंटरनल प्रोडक्ट्स, एंड इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें एक इंस्टॉल बेस में हो सकती हैं। देन इसमें आई फाउंड वन एग्जाम्पल कि जैसे आपने एयरलाइन कंपनी है, उसको एयरलाइंस का सर्विस मेंटेन करना है, उसको सर्विस प्रोवाइड करना है, सो दैट दे हैव क्रिएटेड एज अ इंस्टॉलेशन। तो उसमें जैसे उनका एयरलाइंस के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें वो डाल सकते हैं हम। जैसे मल्टीपल एयरलाइंस हैं, मल्टीपल प्लेन्स हैं, तो मल्टीपल उसको मल्टीपल को भी सेम इंस्टॉल बेस में लाइक काइंड ऑफ फंक्शनल लोकेशन बना के दे कैन क्लब इन वन इंस्टॉल्ड बेस। सो इंस्टॉल्ड बेस के डिफरेंट डिफरेंट इसमें एग्जांपल्स हैं कि जैसे कुछ पार्ट्स को ही केवल दे आर मैन्युफैक्चरिंग, अगर असेंबली मतलब इट इज इंस्टेड ऑफ फुल प्लेन, अगर कुछ पार्ट्स को हम असेंबल अभी किया नहीं है, बाद में असेंबल कर रहे हैं, तो दैट आल्सो वी कैन डू। सो डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग द इंस्टॉल्ड बेस। वो आप कोई भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन का यू कैन थिंक ऑफ, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। हम्म। Then implementation considerations. So you can use installed base management instead of maintenance bomb. इंस्टॉल्ड बेस प्रेजेंट द फॉलोइंग एडवांटेजेस। जो एडवांटेजेस है, मल्टी लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स। सो बॉम्ब में केवल मटेरियल आप डाल सकते हो, बट इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, फंक्शनल लोकेशन और सीरियल नंबर, मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, तो इसमें आप सारी चीज़ें डाल सकते हो, सो दैट इज एन एडवांटेज। देन टेम्पोरर लिमिटेशन थ्रू रिकॉर्डिंग ऑफ इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलिंग times for component of the installed base. Components do not have to be represented as equipment master records. You can record additional data for the components. So these are some of the advantages। मतलब मेन चीज है where to create and what is how to check this, वो अपने को पता होना चाहिए। Then integration, this is integrated to uh, in PM and CS, दोनों में इसका दोनों से आप क्रिएट कर सकते हो दिस इंस्टॉल्ड बेस। एंड फीचर्स यू कैन डिस्प्ले विद स्ट्रक्चर, विदाउट स्ट्रक्चर। हाँ, जैसे ये एक एग्जांपल है इंस्टॉल्ड बेस का। इक्विपमेंट आपको दिख रहा है मतलब इंस्टॉल्ड बेस जितना ब्लू एरिया है, ये दिस इज कंप्लीट वन इंस्टॉल्ड बेस इंस्टॉलेशन। ओके, तो इसमें इक्विपमेंट्स भी हैं, देन यू हैव सीरियल नंबर, मटेरियल नंबर, एंड देन यू हैव फॉर इक्विपमेंट्स के अंदर में फिर उसके मटेरियल सब कंपोनेंट्स। सो दिस इज काइंड ऑफ all the different things combined in one a single installation। So is kind something like this you will create जब इंस्टॉलेशन रहेगा इन रियल टाइम। देन ओके, दिस स्क्रीन्स वी हैव सीन IB51 यहाँ पे क्रिएट करने का। एंड ये तो उसके मतलब सेम अंदर की जो स्क्रीन है, so this is the same screen what I have shown you। so then ये ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको शो कर ही दिए यहाँ पे। दिस, हाँ दिस कंपेयर। किसी दूसरे का कॉपी करके क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप जैसे यहाँ पे क्रिएट में जाके आप ये रेफरेंस ले लेना, मतलब जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वाला है ना, कोई भी एक एग्जिस्टिंग ले लेना, फिर उसको आप जब कॉपी करके बनाओगे तो डेटा सारा कॉपी हो जाएगा। देन यू कैन चेंज मटेरियल, यू कैन चेंज इक्विपमेंट। मुझे एक मटेरियल कोड मिल सकता है क्या वो प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि वो एक चीज था, मतलब नहीं तो नया क्रिएट करना है तो फिर से मुझे वो पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये वगैरह सब करके वो करना।
हाँ मतलब इस इंस्टॉल्ड बेस के लिए कि आप इन जनरल पूछ रहे नहीं हो? नहीं, जनरल मुझे इसके लिए मतलब प्रैक्टिस के हाँ लिए। मैं आपको कुछ मटेरियल्स भेज दूंगा, कुछ हाँ मटेरियल्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो जब हम लोग वैसे जब वो सर्विस ऑर्डर वगैरह क्रिएट करेंगे उस समय वो सब यूज़ होगा। ओके फॉर टाइमिंग व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली, आप इक्विपमेंट्स में और मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में जाके ओके यू कैन, आप एग्जिस्टिंग देख लो, डिस्प्ले में जाके सर्च कर लो कि एग्जिस्टिंग कौन सा है, ओके और उसको रेफरेंस लेके या सेम डेटा लेके आप बना लो। ओके ठीक है, आई विल शेयर यू सम मटेरियल्स आल्सो, डोंट वरी, दैट आल्सो आई विल शेयर विद यू। सो आज के लिए तो मैंने इतना ही प्लान किया था, मैं नेक्स्ट सेशन में बॉम्ब कवर करूंगा। चलिए। एंड सो आई एम गोइंग स्लोली, आई डोंट वांट टू हरी अप, मैं मतलब कि ताकि नहीं यू आल्सो कैन प्रैक्टिस एंड। नो ठीक, इशू। ठीक है ना? ठीक या है देन, मैं ये आपको उसमें डाल दूंगा फोल्डर में, यू ओके कैन डाउनलोड चलिए फ्रॉम देयर। चलिए। हाँ ओके देन, हाँ ओके, टेक ओके केयर, बाय, गुड थैंक नाइट, बाय बाय।